Okay, live started. Yeah, it started. Okay, hello everyone. My name is Dr. Arif Hussain and I'm a plastic and cosmetic surgeon. And at the moment, I'm sitting at Altamash Hospital. Get ready for your questions. Take out pencil and papers. Go on Google Doctor and ask me everything regarding any cosmetic procedure. And I'm ready to help you out. So while you just get engaged, I've done my clinical fellowship in aesthetic surgery from Toronto Institute of Plastic Surgery. I practiced there and I've learned a lot of things from Canada. And I've done my master in plastic surgery too. And I come to Pakistan for surgery and operate here for like a month or so. And if you have any question, you can ask. Okay? But there's that phone I cannot see a little bit. Can you read the questions? Yeah, okay, I'll read it. There's no questions yet. Oh, people are engaging. Hello, hi, I'm good. Okay. Get ready, ask anything. Yeah. So you can start off. Okay, so meanwhile you just gather your questions. So मैं कुछ शुरू कर देता हूँ. I'm like cosmetic surgery. What is cosmetic surgery? We'll start from there. Okay. So cosmetic surgery is any surgery just to beautify yourself, just to get back to your old age, and unlike if you have some disfigurement on your face and your body, we can just do that as well. So liposuction is the most common cosmetic procedure, breast augmentation, facelift. And can you just plug in the charger with that, please, and bring it so that it should not go bad. So I'm going live, so you will be watching everything and listening everything. So let's start with liposuction. Do you guys have any question regarding liposuction? There is a question. Any other alternate to gynecomastia? Well, gynecomastia is a female breast in man. It's a very social taboo in entire world. But unfortunately, there is no medicine. Even if you work out, you'll just reduce your fat, but you cannot release your glandular tissue. But some medicines are applicable at the teenage. The physiological gynecomastia arise at 14 से 15 साल की उम्र में आता है. उस वक्त नोटिस जाता है, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता है, तो मेडिकेशन निकल जाती. Once it's gone, आप टीनेज से आगे निकल गए, तो मेडिकेशन हेल्प आउट नहीं करती हैं. इवन कोई भी एक्सरसाइज जिम भी हेल्प आउट नहीं करती हैं, क्योंकि इट्स अ फीमेल स्ट्रोमल टिश्यू. अगर कोई ऐसी बात होती तो women they work out, उनके भी ब्रेस्ट टिश्यू छोटा हो जाता. So I do very latest daycare procedure. आप आएंगे मेरे पास, आप जाग रहे होंगे, you'll be watching my procedure and you can leave. So I've cultivated this procedure in like 15 years of time and I do a lot. Any other? Yeah, there are no other questions. Okay, can No, you talk about mommy makeover? Mummy makeover. Who is? Hani Shakil. Anisha. Hani Shakil. Hari Shakil, mummy makeover. Mummy makeover is a very interesting procedure. I do a lot. In which as it says, जैसे कि मम्मी मेकओवर है, जब ख़वातीन की शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाएं, ज़ाहिर सी बात है उनमें ड्रास्टिक उनकी बॉडी में डिस्फिगरमेंट आती है ड्यू टू द प्रेगनेंसी. उसके बाद जब वो वेट लूज करती हैं तो उनके सारे मसल और बॉडी स्ट्रेच आउट हो जाती है. दैन इट बिकम पेंडोलस एंड लूज. ब्रेस्ट भी उनका लूज हो जाता है, सुकड़ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड मम्मी मेकओवर. जब हम उनको ब्रेस्ट इन्हांस कर देते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से या ब्रेस्ट अपलिफ्ट से, और उनको टमी टक करते हैं, जो नीचे उनके पैनस हैंगिंग होता है उसको निकाल के हम टक कर देते हैं, तो इट्स कॉल्ड मम्मी मेकओवर एंड इट्स द टॉप मोस्ट कॉस्मेटिक प्रोसीजर इंटरनेशनली. नो प्रॉब्लम. कोई और क्वेश्चन है? Yeah, so you can just talk with such questions. ओके, हाउ पेनफुल इज द प्रोसीजर? और दुनिया में कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं है जिसमें कुछ पेन ना हो, ठीक है ना. और लेकिन वो पेन ऐसा होता है कि जस्ट 24 आवर्स तक रहता है. हम उसमें आपको इंजेक्शन दे देते हैं. I do very fast recovery procedures. Liposuction is a very fast recovery procedure. Breast augmentation में करता हूँ 24 hours recovery procedure. तो कुछ पेन किलर्स दे देते हैं, थोड़ा मोटा डिस्कम्फर्ट होता है कोई भी सर्जरी का, लेकिन you will getting better day by day. तो in 3 to 4 days में आप अच्छे खासे बेहतर हो जाते हैं. टमी टक में you required at least a week times to recover fully, means that you can move around, कि आप बाहर जा सकें कोई ऐसी चीज़ें, लेकिन घर के अंदर आप अपने move around कर सकते हैं. क्योंकि कोई भी प्रोसीजर जब मैं करता हूँ उसमें कहता हूँ कि आप 1 महीने बाद उसमें वर्कआउट शुरू करें तो फिर सही रहेगा. और इट्स अ मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसीजर डन इंटरनेशनली. फिर और व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी? लोग मुझसे बहुत पूछते हैं राइट एज.
देयर इज़ अ राइट एज फॉर अ सर्जरी, यानी कि अगर कोई भी आप सर्जरी करें कॉस्मेटिक तो 25 से 26 साल से लेके लाइक 70 ईयर्स तक आप कर सकते हैं अंटिल प्रूवन अदरवाइज। और अमूमन हम एज देखते हैं सर्जरी की जब वी आर डीलिंग विद लाइक द फेस थिंग्स, राइट, कि फेस कितना आपका नीचे जल्दी एज किया है। कुछ लोगों का फेस बहुत जल्दी एज कर जाता है, यानी कि 30 to 35 to 40 ईयर्स में उनका एजिंग ज़्यादा हो जाती है। देयर आर सर्टन फैक्टर्स इन्वॉल्व, स्मोकर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनकी वजह से एज कर जाते हैं जल्दी। या फिर जो एक अपनी उम्र के साथ एज कर रहे होते हैं, दैट गोज अराउंड लाइक 55-50। तो फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग स्टार्ट होता है 30 में, ये क्रोज फीट पे लाइनें आनी शुरू होती हैं। उसके बाद जैसे आप क्रोज फीट की लाइनें आती हैं, फिर आपकी 5-6 साल उम्र बढ़ती है तो यू कैन स्टार्ट हैविंग द लाफ लाइन्स। उसके बाद जब आप 45 से ऊपर जाते हैं तो आपकी स्किन तो लूज़ होती है, आपके अंदर की जो मसल है वो भी लूज़ हो जाता है। मसल लूज़ हो गया, उसके बाद फिर जब आप बहुत ही एज में पहुंच जाते हैं 70+, 80+, तो फिर मसल एट्रॉफी भी शुरू हो जाती है। तो आप देखते होंगे लोगों के फेस सुकड़ने लग जाते हैं। सो राइट एज इज लाइक दैट, if any kind of problem arise on your face, at what age, that is the right age to address that problem. Like अब बोटॉक्स फिलर्स वगैरह 25 to 28 ईयर्स के लोग भी करा रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कराते हैं। Hi, Shakil is asking, doctor, both of my son's chest is heavy, so what should I do? Well, you can bring them to me. I'm here till like 24th and then I'm leaving back to Toronto. उसके बाद मैं फैब में आऊँगा, you can take my appointment. And what are the ages? और मुझे वो बता दें और आके मुझे दिखा दें। आज भी आप आ सकते हैं, sitting at altamash, no problem. Okay, so रिकवर हो गया, हाउ लॉन्ग डज इट, लाइक गायनेकोमेस्टी अगर रिकवर है, मैं ऑपरेट करता हूँ, पेशेंट उसी वक्त चला जाता है, दूसरे दिन मुझे आके दिखाता है और फिर 5वें दिन से वो ड्राइव भी करना शुरू कर देता है, 1 महीने बाद एक्सरसाइज भी करना शुरू कर देता है। लाइपोसक्शन, देयर आर सीक्वल्स ऑफ लाइपोसक्शन कि जिसमें आपका स्टिफनेस, ब्रूजेस, सीपेज ऑफ द फ्लूइड, दैट इज ऑल नॉर्मल, दैट गोज अवे लाइक इन अ वीक्स टाइम एंड यू विल एबल टू वॉक लाइक द नेक्स्ट डे। मैं कोई भी मैं सर्जरी करता हूँ, चाहे वो पेशेंट को मैं एडमिट करूँ या पेशेंट घर भेज दूँ, नेक्स्ट डे से उनको कहता हूँ वॉशरूम जाएं, सारा कुछ करें, एवरीथिंग इज डन। तो रिकवरी इज फास्ट, लेकिन एक नेचुरल रिकवरी का प्रोसेस वो अपना चल रहा होता है। इट ऑल डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट एज वेल कि आपकी विल पावर कितनी है। लाइफोडीमा की ट्रीटमेंट क्या है एज 60 ईयर्स? 60 ईयर लिम्फेडीमा, अब आपके कहाँ स्कॉटल लिम्फेडीमा है या फीट में लिम्फेडीमा है। और लिम्फेडीमा होता क्या है? लिम्फेडीमा ये होता है कि आपकी बॉडी के जो जगहें होती हैं उसमें कुछ लिम्फ नोड होते हैं, गदूद, जिनका काम ये होता है कि कहीं भी इन्फेक्शन हो या कोई भी चीज़ हो तो उसको इंगल्फ करें यानी खा जाए। अगर उस गदूद में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए कहीं भी, तो जहाँ के भी वो गदूद हैं उस जगह की सराउंडिंग में स्वेलिंग आ जाएगी। तो मोस्ट कॉमन फीट में होता है, जिसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, कि मोटा पैर हो जाता है। उसकी ट्रीटमेंट है कि हम उसको डीबल कर देते हैं, टिश्यू का लोड हम करेंगे तो लिम्फेटिक्स जो है काम ज़्यादा करेंगे। सो आप आके मुझे दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Where are you based? Well, I'm based in Canada and Pakistan and in Karachi, and right now I'm sitting at altamash Hospital. Also aligned. आपके तो आई नहीं रहे हैं। Joining है वो। This is joining. Okay. Liposuction procedure please बता दें। So liposuction is the procedure for body sculpting. मैं लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि liposuction weight reduction का procedure नहीं, but we do encounter some weight reduction if you are doing in women. I have heard that मुझे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा महीने के अंदर 5-6 kg गिर गया, लेकिन liposuction जो है weight reduction का नहीं है, body sculpting का है, उन फैट का निकालने का अमल है जो कि ना एक्सरसाइज से डाइट से ना जा रहे हो। So you should be an ideal candidate of liposuction and like you should, your BMI आपका 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी क्लासिफिकेशन बनाई हुई, यानी कि मैं हाइट से डिपेंड करता हूँ, क्योंकि जिनकी हाइट लंबी होती है उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉन्ग बोन्स का भी वेट होता है। तो अगर 5'11" या 6 feet का मेरे पास कोई पेशेंट आता है and he is around 100 kg, then I take him for liposuction or for liposuction. अगर 5'8" है, 5'7" है and they are 100+, then I ask them to reduce weight. What are the side effects of or complications of rhinoplasty or cosmetic surgery? Well, rhinoplasty means nose job, and complication, there is no complication for rhinoplasty. It's just whether you are happy with your nose when we made it or not. Okay, so that the counseling is very important. हमें पेशेंट के साथ अच्छी तरह बात करनी होती है, पहले उसका स्टेटस देखना होता है कि नाक उसकी किस पोजीशन की। नाक की मैं मिसाल इस तरह देता हूँ
कि नाक के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर हैंगर्स, जो आपकी बोनी स्ट्रक्चर है, जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर है, और जो ऊपर की स्किन है दैट इज़ ईदर अ ब्लैंकेट और अ शर्ट। तो आप देख लें, अगर आप हैंगर को शर्ट पे टांगते हैं तो एक्सपोजर अच्छा रहता है, और आप एक ब्लैंकेट को आप हैंगर पे टांग देंगे तो कुछ नज़र नहीं आएगा। तो अनफॉर्चुनेटली जो एशियंस हैं, जो कोरियंस हैं, जो साउथ अफ्रीकन हैं, उनकी नाक जो है वो थिक नोज होती हैं, तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा टाइम लेके आता है। एज पर जब मैं बाहर करता हूँ तो एशियन नोजेज होती हैं वेरी थिन नोज, हमें एकदम उनका रिजल्ट प्रॉम्प्ट होता है। Complication, there is nothing. I mean, there is a little swelling for 48 to 72 hours, and then you are good to go. No problem. Okay, and you can talk about the cultural issues. Cultural issues. So yeah, I'm like practicing cosmetic surgery in the third world country. Even I'm like Pakistan. I have compliments from my abroad surgeon that हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान भी इतना एडवांस हो गया सारा कुछ है, तो मैं इनको कहता हूँ you have to change your thoughts. बट पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स कल्चरल इश्यूज बहुत हैं। यानी कि एक लड़की आई मेरे पास 25 इयर्स, बहुत मोटी थी, ड्रास्टिकली उसने वेट रिड्यूस किया, एंड शी इज़ नाउ बेस्ट कैंडिडेट फॉर एक्सटेंडेड टमी टक और एब्डोमिनोप्लास्टी। लेकिन उसमें हम जब काटेंगे तो विल हैव अ स्कार एट द नेवल एंड, यहाँ पे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो शी इज़ गोना गेट मैरिड, पीपल विल आस्क व्हाट इज दिस स्कार फॉर, राइट? बाहर दे डोंट केयर। ओके, तो हम जो भी करें, तो दैट द कल्चरल इश्यूज हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करानी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ everybody has a right to look good. I mean, like अगर नहीं करानी चाहिए तो I ask them to stop watching GQ magazine and all other things. Why they're watching that? Okay, they should not do that. So everybody has a right to look good, and what we can do, we can do. Okay, so any other question has the date line? Otherwise, Yeah, they're just like joined, and there's this question यहाँ पर PCL. please PCL reconstruction. What is PCL reconstruction? I don't know. Please can you elaborate? I don't know what's that. Okay, non-surgical treatments. No, we'll come about surgical treatment. How can I book an appointment? You can call Altamash, and you can call my number. You can go on my page, Insta page, Static Shapes PK, Facebook, Dr. Arif Hussain, everywhere, or call Altamash directly. And how many plastic surgery trainers I've had? I mean, like I've been practicing cosmetic surgery only for past 16 years. Before that, I used to do a lot of reconstruction. So now I've stick to my cosmetic thing. And there are a lot of non-surgical treatment. बहुत सवालात आते हैं हमारे पास non-surgical के, जो मेरे पास सवाल हैं, कुछ पेशेंट्स ने भेजे हुए हैं सवाल जो हम देख के पढ़ रहे हैं। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब नॉन सर्जिकल, सर्जिकल को आप क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ अगर बॉडी के अंदर इन्वेजिव जा रही है, दैट इज सर्जिकल। तो लेस इन्वेजिव, मोर इन्वेजिव। नॉन सर्जिकल तो जस्ट लाइक लेजर्स, जस्ट मशीनें जो ऊपर से आपके काम करती हैं, क्रीम्स हैं, दैट्स इट। लेस इन्वेजिव में जो है, जो आपके सर्जरी के टाइम को बाय करें तो बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, PRP I do a lot. I've started PRP 10-15 years back in Pakistan. मैंने टीवी पे आके लोगों को दिखाया, सारा कुछ किया। और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट है, वो आपकी कोई भी स्किन को रिजनरेट कर सकती है, बालों की क्वालिटी को ला सकती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि आप जो पेशेंट कॉस्मेटिक का है, he or she should understand what the surgeon is telling them. हमारी एक लिमिटेशन है, हम एक लिमिट तक हर चीज़ को कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग, वी कैन नॉट स्टॉप योर ईटिंग हैबिट्स, वी कैन नॉट स्टॉप योर हेल्दी लाइफस्टाइल। हम आपको लिटरेट कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू, इट कैन स्टे फॉर एवर इफ़ यू जस्ट कीप इट। हम लाइक यू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट करें, नरिशिंग लें, सारा कुछ करें। जैसे लाइपोसक्शन, अगर आप समझते हैं कि लाइपोसक्शन हमने कर दी और 10 साल बाद भी आपकी वहाँ फैट नहीं आएगी, तो इस तरह नहीं है। You can regain fat again, but you have to have healthy lifestyle. जो मैं आपका काम 2 घंटे में कर लूँगा, हो सकता है आपको 1 साल लगे उसको करने में। So it's a big difference. And the success rate of cosmetic surgery is very good in Pakistan even. और and मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे भी लोग मेरे पास आते हैं। I'm always busy whenever I come. I'm doing mummy makeovers, I'm doing facelift, I'm doing gynecomastia a lot, hair transplant. So that's and I do very latest procedures, whatever I do, bring everything from Canada, my drugs, my sutures and everything. और कोई question देख लें उधर? सर वहाँ पर नहीं है? यहाँ नहीं है। Okay, so I'm sitting here. Just Google it out and ask me anything. Okay, or do you want to ask me something?
I wanted to ask about lip fillers and like girls get those cheap fillers done and the drawbacks and the major concerns that they might have in the future because they're the most common. Yeah, lip augmentation with the fillers is the most common procedure internationally, and like you need a plumpy lip, you need like if you just want to enhance it, lip fillers does not even just increase the size of the lips, it just settle your prolegium, everything. So of course cheap fillers they will not work good. Plus lip fillers are not easy to place. यहाँ लोग इसी तरह डाल रहे हैं क्योंकि जैसी लिप के पीछे ही जो है वो आर्टरी पड़ी होती है, ठीक है ना. और अगर आप उसमें चले जाएं तो there are a lot of complications, so you have to be careful regarding that. Okay, and what about body contouring? Body contouring is like everything, liposuction, tummy tuck, breast augmentation, thigh lift. जैसे बहुत से लोग वेट स्लीव रिसेक्शन करा लेते हैं अपने मैदे का साइज छोटा करा के, तो ड्रास्टिकली इनमें चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन डिसफॉर्मेशन हो जाती है बॉडी की. तो फिर हम उनको काट के उनको डबल ब्रेस्ट करके इवन समटाइम्स थाई लिफ्ट कर रहे होते हैं, गिनी के आर्म्स लूज होते हैं तो हम ब्रेकियोप्लास्टी कर रहे होते हैं. सो अगर कोई पेशेंट टमी टक का है और उसमें आप लाइपो करेंगे तो यू विल नॉट गेट दैट मच रिजल्ट. अगर कोई पेशेंट लाइपोसक्शन का है उसमें आप टमी टक कर देंगे तो यू विल नॉट गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. सो यू हैव टू द सर्जन हैव टू पिक द राइट पेशेंट. क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, कल भी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनकी विजरल फैट बहुत थी. दो किस्म की फैट होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो आपके हाथ में आती है, एक इंट्रा एब्डोमिनल होती है जो आपके ऑर्गन्स के साथ अटैच होती है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो वो उनका बिल्कुल जैसे आगे से पेट इतना था, तो वो आए मेरे पास कि लेज़र कूल स्कल्पटिंग. मैंने कहा मैं तो आपको लाइपोसक्शन से फ़ायदा नहीं दे पाऊँगा, तो लेज़र कूल स्कल्पटिंग क्या देगी, क्यों आप यू जस्ट रिड्यूस योर वेट, दैट्स इट. आप आएँ उसके बाद फिर मैं आपको कुछ कर सकता हूँ. तो अगर राइट पेशेंट आप लेंगे और राइट पेशेंट को राइट तरीके से समझाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, पेशेंट भी हैप्पी होगा. क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर जो पेशेंट हमारे जब पास दाखिल होता है तो वो उसकी होप्स यहाँ होती हैं, ठीक है ना. तो हमारे एक लेवल है कि हम उसकी रीच कर दें. जैसे बहुत से मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको मैं फोर्स भी कर लेता हूँ, 6 महीने बाद उनका क्या रिजल्ट आएगा, तो मैं उनके लेवल पर उनकी बात करता हूँ. फिर क्योंकि पेशेंट इज द पेशेंट, ही डजंट और शी डजंट नो एनीथिंग, तो फिर वी हैव टू ब्रिंग देम डाउन टू आवर लेवल एंड एक्सप्लेन रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग. ओके. So what about jawline contouring जो होती है? Jawline contouring we can do with a lot of things, like अभी फिलर से भी हो रही है. हम like किसी का रेमस्टी मैंडिबल का अगर शॉर्ट मैंडिबल है हम फिलर डाल देते हैं. अगर किसी की फैट बहुत है तो मैं लाइपो से उसको कंटूर कर देता हूँ. किसी का मैसेजर का मसल अगर ज़्यादा है तो फिर वी कैन चेक द बोटॉक्स है तो वो वहाँ चला जाएगा. तो there's a lot of things we do. चिन डबल चिन की लाइपो से पूरी चिन कंटूरिंग हो जाती है आपकी, एंड दैट्स इट. ब्लेफरोप्लास्टी है, आंखों की सर्जरी है. अगर आप यू वांट टू लुक यंग एंड यू वांट टू हैव बिग आईज अगेन, so we take out the excess string from your eyes, from your lower lid. जैसे puffiness होती है आंखों में तो वो रेसिडुअल आपके आई बैग्स होते हैं उसके अंदर, उनको हम निकाल देते हैं तो स्मूथ हो जाती हैं. दैट्स इट. लेकिन सब चीज़ों के बाद भी आपको यू हैव टू कीप अ हेल्दी लाइफस्टाइल. दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप. Okay, and can you like brief us about Botox? Like what is like? Botox is a botulism toxin, और जो मसल को फ्लैसिड पैरालिसिस कर देता है. मींस कि वो कुछ अरसे के लिए वहाँ की न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देता ताकि वहाँ एक्टिविटी ना हो. एंड इट्स अ मोस्ट कॉमन इंजेक्टेबल इन द वर्ल्ड, राइट. द फ्राउन लाइंस हैं, आपकी फोरहेड की लाइंस हैं, यानी गुस्से की लाइंस हैं, आपकी ग्लैबुलर फोल्ड्स हैं. मैसेटर की मैंने बात कर दी आपको, मसल मेंटालिस मसल की बात कर दी, ठीक है ना. फिर आपकी ब्रॉ लिफ्ट है, इन सबको बोटॉक्स कंट्रोल कर लेता है. और लेकिन ये है कि इट्स नॉट परमानेंट, यू हैव टू कम अगेन एंड अगेन लाइक 6 months 7 months. तो जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं दे गो फॉर फिलर एंड बोटॉक्स, एंड दीज थिंग्स कैन बाय योर टाइम फॉर द सर्जिकल फेस. फिर एक टाइम आ जाता है जिसमें बोटॉक्स भी आपका हेल्प आउट नहीं करता है, लेकिन फिर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं. लेकिन आई डू कॉम्बिनेशन सर्जिकल विद बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड फैट ट्रांसफर. या फैट ट्रांसफर नाउ, फैट ट्रांसफर इज़ अ वेरी न्यू थिंग आई डू अ लॉट, जिसमें आप ही की ओन फैट लेके मैं आपके फेस को इन्हेंस कर देता हूँ. उससे एडवांटेज ये होता है इट्स ऑर्गेनिक थिंग, उसमें स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, तो वो कोलेजन जो वो स्किन का खुलिया है जो आपको स्किन को लूज करता है उसको एक्टिवेट रखता है. फैट ट्रांसफर ब्रेस्ट में भी होता है. आई डू ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट, जैसे कूले आप अपने हिप्स को इन्हेंस कर सकते हैं.
So we do a liposuction, carve your back, and do the Brazilian butt lift as well with the fat. Okay. And how long? What are the updated things that are coming in abroad and you can't? Yeah, they're supposed to be over here. Like, what are the updations that Pakistan is? Well, if you must be watching my videos on Instagram, I'm doing high definition lipos nowadays. I'm creating. I always say my slogan is that liposuction is not the procedure just to take out the fat and do nothing. It's a continuous battle between fat and the curve. That is my slogan. So I do ab etching, but you have to be a right candidate for that. मोटे लोगों के लिए ab etching नहीं है, ठीक है ना? जो अपने आप को fit रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनके 6 packs या 8 packs or whatever थोड़ी contouring हम दे दें, तो मैं उनको उस तरह बनाता हूँ. प्लस अब जो liposuction मैं कर रहा हूँ जो दुनिया में हो रही है उसमें मैंने फोटोग्राफिक liposuction. इफ़ यू टेक तो किसी की मॉडल की आप तस्वीर देखें तो आप ये देखें कि लाइट कहाँ ग्रे एरियाज हैं कहाँ नहीं है, कहाँ उसकी लाइट पड़ रही है, तो आई क्रिएट ऑल दीज एरियाज. लेकिन ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए जो फैशन इंडस्ट्री में और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास लोग आम लोग भी ये कराते हैं. So that is a new thing. Then there is another thing is a J plasma which we don't have in Pakistan. It's quite costly. इसमें skin tightening होती है after liposuction, helium gas आप अंदर करके skin को भी उसी वक्त tight कर देते हैं. So in future I might be bringing that as well. And there are a lot of procedures. Then there are now deep plane facelifts आ गए हैं. पहले superficial skin excision थे, फिर muscle repair था, muscle plication था, smash plication था. अब आप उसके भी नीचे चले जाते हैं deep plane के, तो आप contours दे सकते हैं face में. हेयर ट्रांसप्लांट जैसे है उसमें जैसे पहले स्ट्रिप मेथड था, मशीन से हो जाता है FUE. तो there are a lot of new things incoming in the market and surgeons are availing that just for the need of the patients, of course. लेकिन if you are giving the best result whatever you're doing, I think you should stick with that. That's my slogan as well. Hair transplant के बारे में what are the different procedures? Hair transplant is androgenic alopecia, baldness होती है, male pattern baldness है. और सिंगल फॉलिकुलर हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अब हम FUE इसमें करते हैं जिसमें स्ट्रिप नहीं निकालते, मशीन से निकालते हैं. लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बाल तो आप दोनों तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन बाल को प्लेस किस तरह करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, किस एंगल में करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. रिजल्ट वेरीज पेशेंट टू पेशेंट. बल्कि इस पर मैं और डिबेट करूँगा कि मेरे बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, हमारा ऐसा नहीं है. तो मैं उनको जब दिखाता हूँ कि भाई आपका आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, यू डू नॉट कंपेयर योर रिजल्ट विद अदर. हर आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन स्ट्रक्चर, फैट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. आप सबको एक स्पॉट में नहीं रख सकते. और हेयर ट्रांसप्लांट इसी तरह है, किसी के थिन बाल है, किसी के थिक बाल है. कर्ली हेयर ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, थिन हेयर स्पेस नहीं घेरते हैं. सो डू नॉट लुक अदर्स, ऑफकोर्स लुक अदर. ऐसा भी नहीं कि बाल लगाएंगे तो बाल ना निकलें, तो फिर आप ज़रूर देखें, ठीक है. लेकिन ये कि डेंसिटी वाइज फिर एज फैक्टर क्या है. यू नीड 2 सेशन, 3 सेशंस और यू नीड 1 सेशन. अगर आप ओल्डर एज में 1 सेशन करा लेंगे तो पेशेंट ज़्यादा खुश रहता है क्योंकि स्टैगनेंट रहता है. यंगर एज में आप कराएंगे तो आपके पुराने बाल फिर भी गिर रहे होंगे, तो फिर वो डेंसिटी कम लगेगी, तो यू हैव टू कम अगेन एंड अगेन. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल and it's a very successful procedure internationally and here in Pakistan as well. Okay, and I want to ask like the common like questions that usually patients ask you regarding the things like liposuction everything. The patient like asks me very myths. funny questions. Yeah. Like for the nose job, they bring pictures of the celebrities. Can you आप ऐसी नाक बना देंगे? तो मैं कहता हूँ मैं ऐसे कैसे बना सकता हूँ, वो तो वो हैं, आप हैं, आपकी तो उससे अच्छी बनेगी. You like that? एंड फिर बहुत से पेशेंट मुझे बेचारे इनको पता नहीं होता, वो आते हैं कहते हैं कि भाई 12 किलो निकालने के आप कितने पैसे लेंगे. तो मैं कहता हूँ भाई क्या निकालने के पैसे लेंगे. तो फनी क्वेश्चन. लेकिन ये है कि पेशेंट का मेन ये होता है कि व्हाट वुड बी द आउटकम. तो आउटकम ऑलवेज डिपेंड व्हाट इज योर करंट स्टेटस, ठीक है ना. उसी तरह आई कैन नॉट, एक बहुत मोटा पेशेंट है तो उसको मैं बिल्कुल पता नहीं कर सकूंगा. किसी का बोनी स्ट्रक्चर चौड़ा है तो उसी हिसाब से उसका हैंडसम रिजल्ट आएगा. तो यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स. एंड इंटरनेशनली भी सारी चीज़ें होती हैं. होता ये है कि जो इंस्टा पे या गूगल पे लोग फोटोशॉप करके बाद पिक्चर्स लगाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स जिसमें मैं कह सकता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका ऐसा रिजल्ट हो, ठीक है ना. अच्छे सर्जन जो देखते हैं जनरल रिजल्ट लगाएं तो अब लोगों की फिर सोच बदल जाती है. यू गॉट नो पॉइंट. सो इंस्टाग्राम और वो सारी चीज़ें, मेरा इंस्टाग्राम पेज इज अ टीचिंग
मैं टीच स्टूडेंट्स में सारी चीज़ें करता हूँ. मुझे भी एक पेशेंट ने कहा, कमेंट किया कि उसका मुझे ऐसा लगा, इसका ऐसा लगा. कम हर चीज़ डिफरेंट होती है. So, but I love my patient. I try to do my best for them. I just give my life. Plastic. I'm passionate about my work. What about BBL? BBL is Brazilian butt lift, the most common procedure. और उसमें हम ये करते हैं कि BBL अब ये है कि लोग, मेरे पास ऐसे भी कुछ पेशेंट आए हैं जिन्होंने BBL कराया. मैंने कहाँ कराया? इन्होंने बैली से फैट निकाली और हिप्स में डाल दी. This is not BBL. BBL means you have to carve the lower back, hourglass or S-cross shape. So अगर आपके पास फैट कम है तो आप बैली से निकालें. But I start with the back, the bra fat and lower back. I give the S curve क्योंकि आपकी कमर जब जितनी आगे से S curve जाएगी और जब मैं फैट डालूंगा तो वो अच्छा शेप आएगा. तो I make a diamond and all these, a lot of things I do. And the success rate of BBL is higher than the breast fat transfer क्योंकि breast में हम इतनी फैट डाल नहीं सकते. और जाहिर सी बात है फैट एब्जॉर्ब भी होती है 50-40%. तो अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे एब्जॉर्ब होकर भी वो स्टेज देयर. और फैट को सर्वाइवल के लिए फैट चाहिए. तो बटक्स में फैट ज़्यादा होती है तो फैट का सर्वाइवल ज़्यादा होता है. ब्रेस्ट में कम होती है तो सर्वाइवल कम होता है. दैट्स इट. इवन लाइक कैल्स पे जो आप करते हैं, कास्ट में भी जहाँ फैट होगी वहाँ सर्वाइवल ज़्यादा होगा. वरना आई से 50% एब्जॉर्प्शन, द सर्जन से 25-30%. दे कैन डू दैट. बट मेजॉरिटी ऑफ द गुड सर्जन दे से 50% एब्जॉर्प्शन द फैट. या. And also, I want to ask like the new treatments that are coming for such treatments like liposuction. There are a lot of upgrades now, like you just mentioned. Yeah. And even for fillers, there are a lot of upgrades now that people, I think. Well, fillers is just the hyaluronic acid, right? It's the Like apart from them as well, like the new. There is a new thing. It's hypergluteal radius, जो अभी यहाँ नहीं है. It's a liquid kind of a thing which start acting after like 2 to 3 weeks, and it's quite good for your necks and for your jaws. And अभी पाकिस्तान में नहीं आया है. I might bring them. And what do they do? Well, it regenerates your skin. I'm like, whenever you put the filler, I'm like, it start retaining the water over there. If you start retaining the water after a week, your skin glows. Okay, fat we inject, it's augment, it glows immediately. Okay, so ये सारी चीज़ें हैं. And cosmetic surgery में बहुत कुछ हो रहा है. I mean, like there's a lot of things going on. I mean, the breast augmentation, dual plane में जा रहे हैं आप. augmentation का maxtopexy, lollipop maxtopexy आ रही है जिसमें आपको हम सिर्फ lollipop से ही लिफ्ट कर देते हैं बना के एरोला के साथ. फिर एंकर लिफ्ट है. there's a lot of things. अब पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ भी है. मेरे पास पेशेंट्स बहुत आते हैं. they're scared of the scarring. तो मैं स्कार पे डिबेट करता हूँ. प्लास्टिक सर्जरी से लोगों का जहन में ये आता है कि देयर विल बी नो स्कार. ठीक है, इफ देयर विल बी नो स्कार देन व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्कार, राइट? आप इसको कुछ और कहें, ना निशान, नो स्कार. स्कार इज अ गुड स्कार और अगली स्कार. यू हैव टू डिबेट दैट. व्हाट इज अ गुड स्कार? अ गुड स्कार वो स्कार है जो आपकी लाइंस में छुपा हुआ है, जो लेस विजिबल है, जो डिसकलर नहीं है, जो मोटा नहीं है. ठीक है ना? अगली स्कार इसको सबको ऑपोजिट कर लें. वो है जो थिक स्किन होती है लोगों की, जो काली स्किन होती है, डार्कर स्किन होती है, उसमें स्कार ज़्यादा बनते हैं. जो वाइट स्किन होती है उनमें स्कार कम बनते हैं. तो जो लोग हैं वो ज़्यादातर बाहर की पेशेंट्स की तस्वीरें देख रहे हैं जो कि फेयर कॉम्प्लेक्शन में उनको स्कार नज़र नहीं आता. हाँ, मेरे एक पेशेंट जो इंस्टा पे मैंने एक माउल्ड टमी तक का पेशेंट का रिजल्ट डाला जेन्युइन स्कार के साथ. एक पेशेंट ने मुझे कमेंट किया, वो 1 साल बाद स्कार भी इनका नज़र आ रहा है, बाहर की सर्जरी में तो नहीं आता. तो मैंने तो नहीं कहा. एक वन ऑफ माय पेशेंट, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया. तो बिगनी इंसिजन में छुपा हुआ होता है, जो बाहर की तस्वीरें वो बिगनी के साथ होती हैं, राइट? सो मैं भी उसे छुपा दूंगा तो नज़र नहीं आएगा. मतलब मेरे तो बड़ा बने कि मैंने स्कार भी दिखाया कि 1 साल में इतना अच्छा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग. और टमी टक स्कार इसलिए आता है कि आप स्ट्रेच करके स्किन को बंद करते हैं. बहुत से पेशेंटों में कहते हैं हमारा सी सेक्शन हुआ था, सिजेरियन हुआ था, तो उसमें तो बिल्कुल पतला स्कार था. तो रीज़न बिहाइंड दैट कि सी सेक्शन था, दैट मीन्स कि वो बलून हुआ था आपका बेली, और जब वो बलून में से हवा निकली तो आपने बगैर टेंशन में बंद किया तो स्कार नहीं आता. व्हेनेवर यू क्लोज द स्किन विद टेंशन इट ऑलवेज क्रिएट द स्कार, बट यू हैव टू हाइड द स्कार. So I bring my special sutures, Covidin, Biosin, Monocryl from there, I'm telling the names, which gives very neat scar. Is it possible to regenerate skin if it has been damaged by chemicals, etc.? Yeah, but we have to see what kind of damage do you have on your skin, किस किस्म की है.
और Lateral plasma will help you out. अगर हमें कहीं surgery करनी है, it will help you out. You can come again. We can do everything, inshallah. Okay. Breast augmentation. Yeah, breast augmentation is the topmost cosmetic procedure internationally. और अब उसके बहुत से सवाल मुझसे होते हैं. So silicone is the largest element found on earth, and it's the safest procedure, FDA approved. And choose of the right implant is very important. कि आपको कौन से साइज का इम्प्लांट चाहिए, तो हम बिल्कुल आपके ब्रेस्ट के नीचे एक इंफ्रामेमरी फोल्ड के अंदर इंसिजन देकर हम आराम से इम्प्लांट को प्लेस कर देते हैं. देयर आर अदर इंसिजन साइट, सबएरुलर, ट्रांसएक्सलरी, बट जिसमें सर्जन जिसमें हैप्पी है वो वही काम करता है. And it gives you firm breast, augmented breast, and increase the size. And but if your breasts are loose and ptosis, your nipple complex droop है नीचे, so फिर we'll have to lift the breast first, then place the implant. And in that scenario, I place the implant first, then I cut it and lift it, so that I can have an idea how much skin I need to cut. Okay, can you like describe about like treatments regarding the eye? Like you told me like कि वो upper loop को आप use करते हैं, and other related to that कि जो आप कहते हैं ना dark circles हैं, कुछ लोग के यहाँ पर proper like वो होते हैं. Tear troughing की बात Tear करें. troughing. So there is a called thing tear troughing, जो कि आपके आँख के नीचे groove बन रहा होता है. Sometimes soft tissue आगे जाके वो आपका जो है वो ligament होता है, वो attach होता है जो bone के साथ, वो depress हो जाता है. So that cannot be treated surgically that much. So we have to fill the place, fill up the place. So fillers is the answer for that. Fat is the answer कि आप वहाँ fat डाल दें. लेकिन ज़हन में बस ये रखें कि you have to give a surgeon a good follow-up and just listen what he's saying. The thing is that I ask my patient to come here in Pakistan. I just call them personally. Your follow-up is due, please come. And they're so happy. I'm like, come on, you have to come. I told you have to see me after a week or 2 weeks. So that's a difference. ये भी culture अब आ जाएगा. But Pakistani patient, I love them. I'm like, there's a lot of sweet patients, and I love my patients. I love them. मैंने कहा था चार्जर लगा लें. Charger slot यहाँ था. Okay. मेरा किधर था? I'll save the video and send it to you. Okay, no problem. And और कोई आपको topics आपने करना है? Well, I think we have done. If there are any other question, we can do that. Just link them down. Just tell them कि नीचे ज़्यादा लिख दें, and then I'll let you know. So what you can do is that, guys, this video will be going. You can just write down and share your thoughts, share your questions with me, and I will get back to you. Sure. And once again, I'm leaving like next week back to Toronto, and I'll be coming back from there in February, and we can have another live session like that. No issue. Have a good one. Take care of yourself. Allah Hafiz.